Let's start with true and false number 17. The theory of income determination is the core of macroeconomics. Which statement is true? Okay. The level of income and employment in an economy is determined by effective demand. Yes, demand पे ही तो निर्भर है, हाँ, कि income कितना, employment कितना. So the statement is true again. When income is zero, consumption is also zero. इनकम जीरो होगी तो भी इंसान क्या खाना छोड़ देगा? कंजम्पशन तो करेगा ही. सो बेसिक नीड्स का तो उसका कंजम्पशन होगा ही. सो व्हेन इनकम इज जीरो, कंजम्पशन इज जीरो इज फॉल्स. इट कैन नेवर बी जीरो. Even if income is zero, consumption can never be zero. The statement is false. Next, when consumption expenditure is equal to income, saving is zero. हाँ, जितना consumption है, जितना इनकम है उतना का उतना सारा कंज्यूम कर लिया तो सेविंग तो जीरो होगी. द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज मेड विदाउट रेफरेंस टू प्रॉफिट. बिना प्रॉफिट के इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बिना प्रॉफिट के किया जाता है बिकॉज दैट इज फॉर वेलफेयर. पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट तो is always for profit, so the statement is false. Propensity to consume means a mere desire to consume. सिर्फ desire नहीं है, more than desire. So the statement is false. Demand और desire में बहुत फर्क होता है. Next, सेविंग आर नेगेटिव बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट. हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट्स के पहले सेविंग नेगेटिव होती है. सो इट इज ट्रू. एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड एंड फॉरेन डिमांड. सो अग्रीगेट डिमांड एडी, तो CIG कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड एंड फॉरेन डिमांड X-M सब ले लिया इसने. स्टेटमेंट इज ट्रू. Next, determinants of aggregate supply are natural resource, labor, capital and technology. So, supply N bar natural resource, L labor, K bar capital and state of technology T bar. So, the statement is true. Next, when consumption function or propensity to consume explains the relationship between income and consumption, C is equal to function of income. Statement is true. C is equal to FY, that is consumption is equal to function of income. Statement is true. Next, APC, average propensity to consume, is equal to C by Y, consumption upon income, where C is equal to consumption and Y equal to income. True. MPC, marginal propensity to consume, is equal to change in consumption upon change in income. The statement is true. Marginal मतलब additional होता है. Saving function shows functional relationship between saving and income. इनकम होती है, उसके ही तो दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग. सो इनकम को Y से डिनोट किया, कंजम्पशन को C से और सेविंग को S से. सो सेविंग फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम. Obviously, yes, it shows. So the statement is true.